Hello everyone, welcome back to your channel Thakors in Europe. My name is Dheeraj. I'm here with a topic about the transportation. I think it's a long pending topic because I promised this topic in March when I launched the video for income tax. But now I think this is a long pending topic which I'm going to cover today. And thank you so much for subscribing. If you have not, please like, subscribe, and share with your friends so that it can help somebody in need, because this is going to be the most important video about the transportation system in Poland, discounts and monthly pass. But primary focus will be on zone. How about the discounts on various situations and the how to apply the monthly transportation pass. So there may be many ways to do it. There may be many ways to get various transportation options, but here I'm going to only cover the one which I have tried and tested and did research so that it can help your simplify your life. And as whatever information I'm providing is not something I'm providing new. It is already available in the public domain, and you can click on this link and you get the information. But still, I'm going to highlight the main important point. And before I start, let me give this disclaimer that all information provided in the video is to help expats in Poland selflessly. However, this is subject to change anytime, and all latest information must always be checked from official websites, which is ztp.krakow.pl and kk.krakow.pl. And also for Warsaw, in the description, I have shared the link which you can use for Warsaw related information, same way for Rocklo and other cities. And Tacos in Europe, this is the channel which is not responsible for any changes in the price, terms, conditions of the transport company, and viewers must verify for the latest updated information from their local transportation vendor. We respect different ways and point of views on this topic. However, uh, this video is an attempt to cover one topic that we have tried and tested to ensure it helps other expats. So now let's start our first part of the video, which is I know there are a lot of intelligent people who already know about this, but there are lot many people who still do not know. So please don't judge what kind of information is providing, because this may not be useful for you, but it may be useful for others. So everyone who do not know, this is the machine you may have seen at a lot of tram counters or bus stops, which you can use for the recharge, uh, recharging the Karta Krakowska Miejska card, which I'm going to explain in the last of the video. How can you make the monthly pass or Karta Krakowska Miejska pass, which is mostly for the tax resident. And apart from that, you can also use this machine to buy the paper tickets, but make sure when you buy this paper ticket for the transportation purpose, you need to validate by inserting here. When you will insert this, this will be validated. If you don't do it, as soon as you get in the bus or tram, you have to insert that paper ticket if you have purchased paper ticket here. Otherwise, that ticket will not be valid and you may be charged penalty on that. So be very careful. And for example, if you have purchased the 24 hours or 72 hours of paper ticket, for the first time when you want to use it, you need to insert it here and get it validated. After that, you can use it for, let's say, 24-hour duration you have, then 24, otherwise 72 hours, then 72, or any hours duration you have purchased for. But important thing is you need to validate only once when you buy a paper ticket. Otherwise, this ticket will not be valid. This is very important information, because a lot of expats who come here new, they do this mistake, and as a result of which they have to pay heavy penalty. Important thing about apart from the paper ticket that you use, okay, paper ticket you take, you insert there, you validate, it's perfectly okay. But what about Karta Krakowska Miejska card? When you recharge, it is always advisable to check the validity of the card after recharge in this particular application, like yellow application, because many times you do recharge with card and it doesn't get activated. So always validate, otherwise you might be in trouble sometime. This is just a extra piece of information which I think you should be careful about. So paper recharge, always insert and validate. Karta Krakowska recharge, when you have recharged here, you can either check validity in this machine or validate here and check, ensure if you have the validity to be on safer side. However, there's another way to book tickets, which is Jakdojade app. I'm going to show you in some time, and that you can use for purchasing ticket online. I will show you as we proceed in the video. But
Before we step towards that, let's understand how are the zone systems work, because many times you may be traveling, you must be confused that what are the zones basically here. So this is the Krakow map, and this is also from KMK website. I'm going to, let's say, help you navigate through it. So let's go to this. So how do you define whether your area falls in zone 1, zone 2, zone 3? Because this is very important for buying pass. In Krakow, most of the places like Novohot or other places where I go, or all my friends come in zone 1. So that's why buying monthly pass of zone 1 is enough for me. But if you want to verify whether your area comes in zone 1, 2, or 3, then this is the portals at tp.krakow.pl. In that you can choose the option of zones, and then here you can verify. So if you want to understand briefly, these are the uh, Krakow city zones in zone 1, and then in zone 2 these are the areas which comes, and in zone 3 you have these places. Okay, so and you may be aware, and if you don't, let me tell you, if you are you have purchased ticket for zone 1, or you have a pass for zone 1, and if you travel in zone 2 or zone 3, you will have to buy a separate ticket, or you may be charged penalty, as it is also giving description that in zone 2 and 3 passengers may only travel with a ticket valid for the public transportation system in zone 1, 2, and 3. Otherwise you will be charged penalty. And if you are carrying any discounted ticket, make sure you have the document to support the discounted ticket. Now I will explain this later when we progress in the video. Now understand another way how to find which zone your area comes in. You can just download this Jakdojade. This is the very important press application in Krakow. If you are new to Krakow, remember this. When you this is the first thing you should install in your phone, in spite of apart from the cab application like Bolt, Uber, or Free Now. This application, when you install and when you register, after that you can book transportation ticket free of by paying it online. And this is how you can define it. So it's very simple to use. So for example, this is your current location. You can put your current location. If you go to, let's say, Warsaw or any other city, you can choose the city from here. And then after, you can understand, you can put here destination. For example, I will put let's say a location of this, and then I put the location of, let's say, Crespino I want to go. So I'll put Crespino. And then after, when I click this, I can select this, and here I get an option to buy ticket. So you can buy ticket like this, and you can also buy various tickets like hourly tickets or minutes ticket, whatever way you want. And if you want to see what zone your area comes in, thanks to our friend Anit who helped us understand. Uh, so these area where you see nothing, these are in zone 1 generally. And where you see this kind of sign like 2, it is in zone 2. So this is how you can identify another way how your zone is, or which zone your area falls in. Please don't blame me if something changed, because this keeps changing, and it may be changed in the application. Sometime you may not see like this, then refer to this video. As I said, I don't take guarantee of the information, because it's not from me, it's from the website which I'm sharing. My objective is to bring you the solution and keep things handy, so that if sometime you get stuck with the ticket checker, you have the evidence to show that you are right at your part. So please understand things very carefully now. So this is the map of zone 1, 2, and 3, and here you can show the, okay, my ticket is for zone 3 and I have ticket of zone 3. If my ticket is for zone 1, then verify from here, and then you can say the ticket checker that your website says like that, and that's how you can fight for yourself. So I hope two parts are clear. Number one, when you enter any tram or bus with a paper ticket, you need to validate in that yellow machine, and you can use the kiosk machine to buy tickets or recharge your card. And second thing is zone 1. I hope these doubts are clear. If not, maybe at least 70-80% clear. Okay, so now let's move on about the discounted passes. So then next is like, this is the place where this is the link. Keep this link handy, so that if sometime ticket checker catches you, you can show them, because this is from them. So this is the evidence. For example, children below 7 years of age, if they are entitled to travel free across Poland, even in Warsaw, I verified with the website of Warsaw, and you can check in description about the link, and they can travel free. And
They just need to carry any age proof, maybe TRC, blue card, passport, anything. Or obviously students or children will not have blue card, but at least their age proof, anything which has their age proof and photo clear. So you can show this link to them very carefully. And let's talk about the inspection right of the ticket checker. So no matter whatever discounted things you are using, you're supposed to, or if you have Karta Krakowska card, even then you need to show additional ID proof to prove yourself, because sometimes a ticket checker may ask you, and it is their legal right as per this. This is how the ID of the checker in Poland looks like, uh, as per this website. And as I said, I'm not providing any information extra. You can see here, it clearly says that. Okay, and this is about the ticket checkers, right? This is how is the form of the mode of the payment. If you refuse to pay, they have the right to take further proceeding. If you are not happy with the fine they have done, you can appeal in this place, public transport office, between this time, and this is the number, this is the email ID where you can inquire about it. So against the ticket checker, if you want to complain, that also you can do here. And then after, here is the complaint segment where you can complain about if you think that the fine you have been charged is invalid. And there are passenger service points also. I have shared this link in the description for passenger service point, where you can uh, get services like making the new cards, or Karta Krakowska card, or other approvals that you need for the discounts on the card. And here are the penalties information, in the about the various conditions where ticket checker charge. So you can refer to this and ensure that if he's charging you fine as per the rules and regulation. And this is the account details where you can make the payment about the penalty. So it's very straightforward, very simple. And I hope this link, if you go to this link, I've shared direct link to this, so you can easily uh, refer to this when you are caught by, God forbid, if you're caught by ticket checker and if you have to pay penalty, you can refer to all this particular link for all the essential information. They also have debt collection. If you don't pay the penalty, they can take action according to these rules. So I'm not going to describe in details because this video is anyways going to be little longer, but I am sure this is going to be the most important video for your usage, and it will simplify your doubts about the transportation system in Poland. So now let's continue with our slide. So I already explained you about the zones of the Krakow, or and same way if you are in other cities like Warsaw or any other city, you have zones divided in almost all part of the Poland. So best idea is Jakdojade app. There, change the city, and it is applicable in most of the major cities of Poland. So it will simplify your journey about the transportation. Now, let's talk about the discount and who all are entitled for free transportation in Poland. So thanks to our all our friends for researching and sharing information and simplifying, making me understand things. That's why I'm able to explain you. Whatever information I'm sharing, you can just click on this link, and I've shared this link in the description where you have all these information. So tomorrow, let's say ticket checker catches you, and if he says no, you have to pay fine. You verify from this link and see if you are right. If you are right, you can fight for your right in all the best possible ways, because I know some of the incidents happen with some schools going children's, and that's why I decided to make this video to make people aware what are your rights and how you can um, fight for your rights if in case you get caught in a situation where you are not wrong. Obviously, if you are not wrong, you can fight always. If you are wrong, then pay penalty and make sure you don't repeat the mistakes, because law is above everyone. So now, who are the people who are entitled for free travel in Poland? So first starts the senior citizens, means age, and I'm not providing this information from my side, as I always say. Always check this link, and there it clearly states individual age 70 and older generally qualify for free public transportation. All they have to uh, show is, when requested, they do not need any Krakowska card or any ticket. They simply can show their TRC or birth certificate or any proof of ID which shows that they are above 70. That is the first people. Second, the children who are below the age of 7. I have shared link in the description, and in the beginning of the video I have shown you very clearly. It states that children who are below 7 are entitled for free transportation in Poland. All you need to do is show any document like passport or TRC which shows that yes, they are below 7. Next category comes is students who are enrolled in grade 1 to 8, or children, you can say, above 7 years of age and up to the grade 8.
they are also entitled for the, so according to police education program, they are entitled to travel freely on public transport in Krakow and also in Poland. This privilege is valid from 1st September to June 30, means not in summer holidays, based on a valid primary school student ID card issued according to the template specified by the ministry responsible for matters of education and bringing. Currently, as of 11 January 2024, the valid ID card for students at primary school and secondary school also, okay, for children and youth is set in is set out in annexure number 4 to the regulation of Ministry of Education and Science, which means that students who are between the class 1 to 8, there's annexure number 4 for the schools. They are supposed to get you the uh, school ID card as per the format prescribed in annexure number 4. And if you have that school ID, you don't need any Karta Krakowska card or anything. Whenever ticket checker asks you, you can show them that you're a school student and it is valid as per the annexure number 4. You don't have to pay for the transportation in Poland and sorry, Krakow. For obviously the school ID card differs city to city, but in Krakow it's like this. And document to valid, obviously you have to contact the school for issuing the ID card as per annexure number 4. So I hope this part is clear. Now, what about the children who are above 9 years of age? And this is the confirmed information or communication from them. So if somebody asks you for evidence, then you can show this. This is the evidence directly from the authority. It's not something I have prepared. We have taken the email confirmation, which you can show to them. Now, students and children under the age, as I explained, is free. So persons with disability. So children up to the 18 with disabilities due to hearing disorder or mental retardation or eye disease or any other things, you can refer to the link. Person with disabilities should have certified degree of disability which is required at the time of availing the free transportation. And this might be interesting for you because if you are a man or woman and if you have donated the blood between, for example, for men it's 18 liter and for women it's anything between 15 to 18 liters. If you have donated blood, then a card confirming the award of distinguished honorary blood donor badge for donating 15 to 18 liters of blood is required to be shown, and you can travel free of cost if you are a blood donor. I'm sure a lot of you must be thinking now to donate blood, and I'm not providing this information also from my side. You can just refer to this link and you will get the information. Uh, So if you're a blood donor, yes, you are entitled for free transportation. Now comes the reduced ticket transport eligibility criteria. So students who are eligible for discounted fares must show their student ID to the conductor or ticket checker when boarding the bus or tram. And that is clearly stating here. And how do you avail this benefit for reduced tickets? For example, you buy a paper ticket from the kiosk machine, then you have to show your school ID card or college ID card or uh, so these are the people who are actually responsible or entitled to get the free transportation, not free transportation, but reduced fare. Children and adolescents from 1st October of the calendar year in which they turn 7 to the age of 16. Okay. Young people over 16 years of age attending public or non-public schools no longer than until the age of 24. Pupils and students of foreign school up to the age of 26 and bachelor's, engineers or master's degree student. All you need to do is to get these discount facilities. Um, a document with a photo and date of birth, a valid school ID or and if you're a college student or international student, you need to have ISIC card called International Student Identity Card. So these are the criterias for getting the discounted pass. Now, I understand by now it must be hodgepodge or confusing. So let's simplify this and I'm going to explain you how you can avail the reduced fare pass. So we are very clear, 7 years and below, we don't have to pay anything, just show the ID of age proof and that's all. And they can travel free, children's. School going students up to the class 8, they can show a school ID card and they can travel free of charge in Krakow public transport. However, this is not applicable during the summer's holidays.
Okay, maybe July and August are the summer holidays here. So during that time, not applicable. That's why when you will receive the school ID card, it will have a validity automatically. So you don't need Karta Krakowska card. Uh, you can apply Karta Krakowska card, but you don't need it because you have a school ID card, which is sufficient enough for you to get the benefit. However, children above the class 9, what should they do? They can simply, or their parents can simply apply Karta Krakowska card for the children. And all for Karta Krakowska card, the requirement is you should be a tax resident or resident of Krakow. Just now, I was talking to one of my friend, and uh, his Polish friend did not get the Karta Krakowska card because he was born in Poland, but he stays in other parts of the uh, out of the Krakow. So that's why he's not the resident of Krakow, and that's why this tax resident certificate. So if you don't have PIT-37, you can apply for tax certificate of Krakow, and based on that, you get this Karta Krakowska card. So that's why when a parent is applying the Karta Krakowska card, they can add their children also. And along with when the children gets the card, along with the at the time of application, they can simply submit the student ID card to get the reduced fare discount. And now let's understand how do we apply the Karta Krakowska card, because we have been talking so much about Karta Krakowska card. So let's understand how do we get the Karta Krakowska card and what is this exactly? See, there is another card. Sometimes Krakow card is also called Karta Krakowska, and Karta Krakowska is also called Krakow card. There is very much confusing, but you have to understand the difference. Karta Krakowska Miaska card is basically also known as KKM. That is mostly for the tax resident of Poland. Sorry, Krakow, tax resident of Krakow. And same way in other cities, there are different cards as per their city tax residency status. What is important is there is another card called Krakow card, which is for tourist purpose. Okay, so that is available for 1, 2, or 3 days, and depending on the tourism requirements, it can be available. But we are not going to cover that because it's not important for us. For us, important is because we are the tax-paying residents. So we Karta Krakowska Miaska is important for us, and you can use it as a electronic card mostly for the monthly. You can recharge monthly or buy individual per day ticket also using this card. Uh, you can buy this in you can get this card in mobile form as well as in physical card form. For example, in my case, this is my Karta Krakowska card, and it has photo ID as well. So that is how I made it. Probably for the video purpose because I mostly travel by cabs. But for this video, I had to make it so that I understand how the process works like. And Karta Krakowska card is free of cost. You can recharge based on your requirements. If you don't need it, you don't recharge. If you need it, recharge for 1 month. Don't recharge for 1 month. Like that, you can do it. So if you have settled income tax in Poland, you can submit the following tax return which are accepted like PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39, 40A. Or if you don't have PIT, you can also request tax certificate from the tax office. And based on that, you can get this Karta Krakowska card with discounted pass. So discount is applicable after PIT when you apply. This is the hotline number and this is the email ID. If you have any query, you can send an email to them. Now, how to apply? Very simple. You can just open this link and then you can register, fill in the information. And when you fill this information, you can simply log in with the credentials you have set up for you. When you log in, you get an option to apply the card here. This apply option, do you see that? So you can click on apply. When you click on apply, you have to fill all the details and then you have to submit the application. Like this, you will feed the data, and when you fill the data, you get an option to check what kind of card do you need. So in my case, I opted for both. Like one is plastic card and another is the mobile application card. You can choose both because sometime, let's say if my phone is switched off and ticket checker comes, what will I do? So that's why I keep physical card with me always, so that I'm not in that situation. It happens with me quite frequently because I receive so many queries in a day, so my phone gets turned off quite frequently. So physical card is more useful to me. But yeah, in some cases, and also this mobile application is in Polish, so sometimes you might face problem in understanding, but it depends on your choice. You can opt for both and you can use any. But what you need to be careful about is if you have physical card and mobile card both, if you have recharged the physical card, the balance or validity will not be transferred to mobile card. So mobile card recharge is separate, Krakow card is separate.
you ensure which one do you want to use. If you use mobile card only, then you don't need to recharge twice. Otherwise, you need separate recharge for both. So you should recharge only one. So do you decide which one do you prefer to use, whether physical or mobile. But both will be activated for 1 year duration, and you can recharge as per your need and preference. So I leave it to you. Now, when you submit this application, you get a reply like this: thank you for applying, your application is pending review. And after that, you need to send an email to this in this format. So send UPO. So I hope you remember my video for income tax. In income tax video, in the last, I talked about UPO form, which needs to be downloaded. If you have not downloaded, log into Padatki, refer to my income tax video, and download this UPO form along with and if it is a minor, attached child birth certificate, and maybe you can use the same file which you have used during the family 500 application and PIT-37, and you can send this to here with this format. So confirmation of the fact of paying tax. I'm looking for a monthly reduced fare pass for transportation for my son and myself. Or if you have children, you can add more children's name, PESEL number, PFA, UPA document, PIT, and birth certificate for your reference. So you can attach all these things and you can send to them. When you send an email to them, they will get, you will see something like this, that your application is pending. You will get a reply and you'll be informed about verification, and maybe in 24 to 48 hours generally you get an email like this. So in my case, if we see, I don't have time here, but generally 24 hours it took for me to get a confirmation like this, that your application has been positively verified. Please contact us by email or by phone for credit card hotline, and this is the number they gave me on working days between this to this. And within 14 days of getting this email, you need to collect your card from the information point. So when you click on this link, or you can check in the description, I have shared the link of the service point. From any of the service point, you can collect this Karta Krakowska card. Here are the various service point, 4 points. We have the service points in Krakow, which are this, and this, and the timings. More information or change in timing, you can always validate from this link. I have shared this link of Krakow service point in description. Same way you have service points in various cities. So you can refer to those links to verify what time and what places you get the services of Karta Krakowska card. Okay, and as I have already explained to you about if you have some complaints about the ticket checker or anything, you can just use this particular link and email ID to file the complaint. So thank you for watching. Please like, share with someone in need, and subscribe for more updates. Please bookmark our playlist for medical in Poland and share your feedback. We really put a lot of hard work, heart and soul to prepare content for the ease of everyone. So I really request you to share your feedback, comment, and add your comment in the comment box, like the video, so that it helps us reach more people, because it is free for you, but it does affect us, because my objective is not to earn from YouTube, but to make sure that it reaches to the maximum audience and it simplifies the life of each and everyone. And I have done a lot of research. This content I prepared 6 months back, but I did not publish because I thought I still need some more addition. And yes, most important thing is, if you feel that I have missed to add something in this, please share in the comment box so that I can update in description. Please always check descriptions of my videos, because I keep updating description. Video cannot be edited, but description can be edited any point of time. Now for the people who do not understand English, I'm going to continue from here in Hindi. So let's स्टार्ट द वीडियो इन हिंदी. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है. ये एक टॉपिक है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था आपकी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसमें हम कवर कर रहे हैं जोन 1, 2, 3, आपके ट्रांसपोर्टेशन रूल क्या है पोलैंड में, और ट्रांसपोर्टेशन पास आप कैसे बना सकते हैं. मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरा अपना नहीं है. सभी लोगों ने, सभी फ्रेंड्स ने अपने ग्रुप से रिसर्च किया है और फिर मुझे हेल्प किया है बनाने में, और यहाँ से आप सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं. अगर कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है जो मैंने अभी बताया और बाद में, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बिकॉज वो सारी चीज़ें आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. इसलिए मैंने डिस्क्लेमर भी लिखा है. सो प्लीज़ हमेशा इस लिंक को आप हैंडी रखिए. मेरे डिस्क्रिप्शन जो है उसको चेक कीजिए, उसमें मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, सो दैट कल को अगर आप कोई सिचुएशन में हो जहाँ आप सही हो और आपको फाइट करना हो, तो ये लिंक्स आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द ओनली इंटेंशन ऑफ द वीडियो.
अदरवाइज बाकी तो काफी सारे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कंफ्यूज हैं, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा मुझे। मैंने इनकम टैक्स वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आप बेस्ड ऑन PIT-37 एंड UPO डाउनलोड करके कैसे आप डिस्काउंटेड पास ले सकते हैं। यानी जो जोन 1 का पास है हमें 80 zloty में मिलता है, जनरली वो प्रॉब्ली 180 zloty के आसपास होता है। तो वो चीज उस चीज के लिए हम यहाँ पर कार्ता क्रिकोस का कार्ड बनवाते हैं, और वो मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपने बहुत जगह पे ऐसी मशीन देखी होंगी ट्रैम स्टेशन पे एंड साथ में बस स्टॉप्स पे। तो ये मशीन जो है, यहाँ से आप टिकट फिजिकल पेपर कॉपी परचेज कर सकते हैं, और साथ में रिचार्ज भी अपना जो कार्ड है यहाँ से कर सकते हैं, और वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। जब भी आप कार्ड को पहली बार रिचार्ज करें, इस येलो मशीन पे टैप करके यहाँ पर लगा के अपनी वैलिडिटी देख लें कि वो वैलिडिटी एप्लीकेबल हुई कि नहीं। कई बार होता है रिचार्ज हो जाता है और वैलिडिटी एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है, मैं इंग्लिश वाले वर्जन में ये बात बताना भूल गया, तो मैं फिर से भी बता रहा हूँ। वैलिडिटी हमेशा चेक किए कर लीजिए। और साथ में आपने अगर पेपर वाला टिकट लिया है, तो पेपर टिकट हमेशा जब भी आप लेके ट्राम में या बस में एंटर करते हैं, तो इस मशीन में यहाँ पर आपको इंसर्ट करना पड़ता है पेपर टिकट। कई बार आप 72 आवर्स वाला या 24 आवर्स वाला टिकट लेते हैं, तो उसको भी आपने टिकट ले लिया उससे नहीं होता है। जब भी आप पहला ट्रांसपोर्टेशन अवेल करेंगे, तो आपको इस मशीन में इंसर्ट करके उस टिकट को वैलिडेट करना है, वरना वो टिकट इनवैलिड मानी जाएगी और आपको हैवी पेनल्टी लग जाएगी। ये पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा हो गया जोन का। जोन के लिए आप देख रहे हैं ये सारा चार्ट है, और मैंने आपको एक ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया था डेमो अभी, कि ये एक ZTP का साइट है। यहाँ आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका एरिया कौन से जोन में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जोन्स है, जोन 2 जोन 3 एंड साथ में जोन 1। अगर आपने जोन 1 की टिकट ली है तो जोन 2 और 3 में ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं तो अच्छी खासी पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए। और एक तो ये ऐप है, अगर आप नए हैं क्रैको में, तो ये ऐप सबसे काम की चीज़ है आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये देखिए, यहाँ से आप सिटी चेंज कर सकते हैं, क्रैको वॉर्सो जितनी भी सिटीज़ हैं वो चूज़ कीजिए, और उसका आप लोकेशन डालकर टिकट परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप टिकट परचेज करते हैं, तो देखिए मैंने ऐसे डाला और ये क्लिक किया, तो इसमें मेरे को ये भी दिखा देगा कि कौन से जोन में मेरा एरिया आता है। जहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है वहां पर तो जोन 1 ही होता है जनरली, और ये जो दिखा रहा है ये जोन 2 का पार्ट है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जोन 2 और जोन में क्या डिफरेंस है। बट स्टिल इससे भी ज्यादा अच्छा जो ऑप्शन है वो ये वाला है, यहाँ से आप जोन वेरीफाई कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज होता है तो ये फाइनल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, आपको यहीं से वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये सारे कंसेशंस के लिए जब बात होती है, जब बोलते हैं कि अरे कवर्ड है कि नहीं है, तो देखिए टिकट चेकर जो है उसका आईडी कुछ इस तरह से होता है। वो आप आईडी देख सकते हैं टिकट इंस्पेक्टर का, अगर आपको दिखाता है तो। लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे रूल्स है आपको फॉलो करने हैं। और ये सारा मोड ऑफ पेमेंट है, अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपका ये जगह है जहाँ पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, ये कंप्लेंट्स का तरीका है। यहाँ से आप सब रेफर कर लीजिए। फीस जो है, अलग अलग टाइप की पेनल्टीज जो है, ये सिचुएशंस है जिसमें आपको अलग अलग टाइप की पेनल्टीज लगती हैं। ठीक है, ये वेरीफाई कर लीजिए। और अगर आप पैसे नहीं देते हैं, उनके पेनल्टीज नहीं देते हैं, तो ये डेप्ट कलेक्शन का उनका टेक्निक है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। तो उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी है, तो जैसे मैं बोला 7 साल से कम उम्र का बच्चा फ्री ट्रैवल कर सकता है विद ए वैलिड आईडी प्रूफ। तो वो आप ये वाला लिंक दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो वैलिड स्कूल आईडी के साथ फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ये वाला लिंक है। लेकिन वो बस पीरियड ऑफ 1 सितंबर से 30 जून के बीच कर सकते हैं, समर हॉलीडेज में एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसी तरह से ये वेरियस ऑप्शन है, ये आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यगदो ऐप जैसा ही सेट, उसको आप एकदम हैंडी रखिए, क्योंकि वो आपके सबसे काम की चीज है जब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं बाकी का जो एजेंडा है वीडियो का। तो ये हमने जोन की बात कर ली, और हमने ये बात कर ली कि ये टिकट अपना हमेशा वैलिडेट करना है यहाँ जाके। और यहाँ से आप पेपर टिकट परचेस कर सकते हो, प्लस मंथली रिचार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हो अपने कार्ता क्रिकोस का मैस का कार्ड का। ठीक है, अब बात आती है फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है क्रैको के अंदर। तो देखिए इसके लिए 70 ईयर्स एंड उसके ऊपर के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, उनको अपना कोई आईडी दिखाना है जिससे प्रूफ हो सके वो 70 ईयर्स उससे ज्यादा के हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया 7 साल का बच्चा जी, वो भी डायरेक्टली आईडी प्रूफ दिखा सकता है। स्टूडेंट जो अप टू 1 to 8 क्लास तक के ग्रेड में है वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एनेक्सर 4 के हिसाब से आपका आईडी कार्ड होना चाहिए बना हुआ, जो स्कूल्स देता है। तो आप स्कूल को कांटेक्ट कीजिए कि ये आपको पास दे। और अगर वो रजिस्टर्ड स्कूल है क्रैको के, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उस आईडी कार्ड के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल मैंने दिया है। बट वो जो स्कूल आईडी कार्ड का जो स्कूल स्टूडेंट्स है उनका ट्रैवल पीरियड जो होगा वो समर हॉलीडेज में नहीं होगा, मीन्स 1 सितंबर से 30 जून के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है,
एंड उसके बाद आता है ये आपका एविडेंस दिया है कि अगर कोई बोलता है नहीं तो ये जी उनकी तरफ से ही मेल कंफर्मेशन है, तो उससे आप यूज कर सकते हैं कभी भी जरूरत पड़े तो। पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ यूज कर सकता है, ठीक है, और ये क्राइटेरियाज है डिसेबिलिटीज के लिए। और उसके बाद जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, अगर मैन है तो 18 लीटर का ब्लड, और वुमेन है या गर्ल्स हैं तो 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स लीटर्स की 15 लीटर्स टू 18 लीटर्स के आसपास ब्लड अगर उन्होंने डोनेट किया है, तो उनको एक कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि ये ब्लड डोनर बैच है उनका, और बेस्ड ऑन दैट दे कैन ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ब्लड डोनेशन इज ए गुड ऑप्शन। नाउ रिड्यूस टिकट्स की बात कर रहे हैं। रिड्यूस टिकट्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं कि अप टू एज ऑफ 16 हो गया, ये यंग पीपल ओवर 16 ईयर हो गया, स्टूडेंट्स है फॉरेन स्कूल के, या उनके पास जैसे आईएसआईसी कार्ड है, स्कूल आईडी है, तो इनसे इन बेसिस पे भी वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये रिड्यूस फेयर है, फ्री ट्रैवल की बात नहीं हो रही है, अब रिड्यूस फेयर की बात हो रही है। फ्री तो हो गया अप टू क्लास 8, 8 क्लास के बाद क्या होगा, ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं। चलो अब इसको समराइज करते हैं सीधा सीधा, जिससे समझ आ जाए कि 7 से नीचे फ्री, अप टू क्लास 8 विद वैलिड स्कूल आईडी फ्री। लेकिन क्लास 9 के बाद क्या होगा, क्लास 9 के बाद आपके जो पेरेंट्स हैं वो कार्ता क्रेकोस का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अपना पिट डॉक्यूमेंट देके, ठीक है, या टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो कार्टा क्रेकोस का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे बताया है, और उसको मंथली डिस्काउंटेड रिचार्ज कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रिचार्ज के लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि आपका स्कूल या कॉलेज का जो आईडी कार्ड है वो उनको दीजिए, और उस आईडी कार्ड के साथ वो जब रिचार्ज करेंगे तो आपका डिस्काउंटेड फेयर आएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि एट एनी टाइम टिकट चेकर आपको स्कूल आईडी मांग सकता है देखने के लिए, या कॉलेज आईडी या आईएसआईएस, जिस भी बेसिस पे आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल हुआ है वो डिस्काउंट वाला डॉक्यूमेंट मांग सकता है टिकट चेकर, उसका लीगल राइट है ये, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कार्तिक कोस्का पे तो फोटो भी लगी हुई है, फिर वो क्यों मांग रहे हैं, लेकिन भाई उनका चॉइस है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, अगर मांग ले तो हम मना नहीं कर सकते, बिकॉज देयर लीगल राइट। अब बात करते हैं कार्ता क्रेकोस का मेयर्स का कार्ड क्या है। ये बेसिकली एक कार्ड है जो हर टैक्स रेजिडेंट को मिलता है यहाँ पर क्रैको में, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है जनरली, बेस्ड ऑन दी ये सारा टैक्स सेटलमेंट क्राइटेरिया है, या टैक्स सर्टिफिकेट के बेस पे आप ले सकते हो। इससे क्या होता है, जब आप ये PIT-37 देते हो तो आपका जो सपोज महंगा वाला पास है, वो जैसे मेरा जोन 1 का पास है, आई थिंक 100 शायद कुछ अमाउंट है जो मेरी याद नहीं एग्जैक्टली, शायद 180 या 160 कुछ है, और वो 80 zloty का मैं रिचार्ज कराता हूँ जोन 1 के लिए। तो ये फायदा होता है ये PIT-37 बेस पे कार्ड लेने का। ये सारे नंबर है जिसपे आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं उन लोगों से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कैसे अप्लाई करना है। देखिए एक चीज और है, क्रैको कार्ड के बारे में बात हो रही तो मैंने छोटा सा कवर किया है कि कार्ता क्रेकोस्का, जैसे मैंने बताया, रेजिडेंट ऑफ क्रैको के लिए, और एक अलग से टूरिस्ट कार्ड आता है क्रैको कार्ड, वो जनरली 1, 2 और 3 दिन के लिए वैलिड होता है। उसके फायदे होते हैं कि फ्री एडमिशन टू म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि कार्ता क्रेकोस का जो है वो बहुत सारी चीजों पे आपको डिस्काउंट दिलवाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गया। इसका ड्यूरेशन 1 साल होता है, जबकि इसका 1, 2 और 3 दिन के लिए होता है। और कॉस्ट जो होता है कार्ता क्रेकोस्का का फ्री होता है, जबकि क्रैको कार्ड का जो ये फीस है ये टेंटेटिव है, ये चेंज होता रहता है, कांट से नहीं होगा, फिर भी आप केकेएम वाली वेबसाइट्स को रेफर कीजिए, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई मंथली पास। बहुत सिंपल है, आप इस पे kk.krakow.pl पे जाइए, लॉगिन कीजिए, अकाउंट बनाइए ऐसे इन्फॉर्मेशन भर के, और उसके बाद जब आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो लॉगिन कीजिए, एंड देन लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, और यहाँ पर आपको 2 कार्ड के ऑप्शन आते हैं, एक है एमके और एक होता है क्रैको कार्ड। क्रैको कार्ड जो है प्लास्टिक कार्ड है, और एमके वाला जो है मोबाइल एप्लीकेशन है। मैंने दोनों ही ऑप्शन लिए थे, बिकॉज यू नेवर नो कौन से का मूड कब हो जाए क्या हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जनरली मैं फिजिकल कार्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत जल्दी ड्रेन होता है, तो फिजिकल कार्ड जो है वो मुझे उस प्रॉब्लम से बचाएगा, जब मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और टिकट चेकर आया और पूछेगा कि आपका टिकट कहाँ है, तो मैं फिजिकल कार्ड है तो आई डोंट हैव टू वरी। बट मेक श्योर फिजिकल कार्ड के साथ आपको एक एडिशनल आईडी कार्ड भी मांग सकता है वो, उसका लीगल राइट है, तो ऑलवेज कैरी एन एडिशनल आईडी कार्ड। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन में रिचार्ज किया तो यहाँ रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही यूज कर सकते हैं। अगर आप दोनों यूज करना चाहते हैं तो दोनों में रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि क्रैको कार्ड रिचार्ज किया या कार्ता मेस का, सॉरी कार्ता क्रेकोस का कार्ड रिचार्ज किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, हालांकि दोनों में डिस्काउंट सेम होते हैं जब आप ये अप्रूवल ले लेते हो तो उसके बाद। तो यो इट्स योर चॉइस, आई लीव इट टू यू विच वन डू यू वांट टू यूज। बट मेक श्योर अगर आप एमके के यूज करें तो यही रिचार्ज करो, अगर आप ये यूज करो तो सिर्फ ये रिचार्ज करो, भले ही दोनों एक्टिवेट हुए हैं और दोनों में डिस्काउंट है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। जब आप अप्लाई कर लोगे तो थैंक यू फॉर अप्लाइंग आएगा, और अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रिव्यू होगा,
इस ईमेल आईडी पे आप मेल डाल दीजिए अपना यूपीओ। यूपीओ आपको पता होगा कि इनकम टैक्स वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि यूपीओ डाउनलोड करके आपको सबमिट करना होता है। अगर बच्चे का भी आप साथ में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, 9th क्लास अबव वाला स्टूडेंट है, तो आप ये चिल्ड्रन बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं और PIT-37। तो इस फॉर्मेट में ये तीनों चीजें भेज दीजिए। और भेजने के बाद आपको ऐसा आएगा कि वेरिफिकेशन इज पेंडिंग या एप्लीकेशन इज पेंडिंग। और जब ऐसा मेल आ जाए आपको कि हैज कि एप्लीकेशन हैज बीन फुल्ली वेरीफाइड आ जाए आपको लिखा हुआ, तो इट मीन्स आपका ये 14 डेज के अंदर आप कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। ये पॉइंट है ना, ये क्रैको सर्विस पॉइंट्स हैं। क्रैको के अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बट फिर भी ये जो लिंक है ना, इस पे हमेशा वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा है जो आपके लिए ज्यादा नियर बाय है, और क्या कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए। कार्ड हाथों हाथ कार्ड मिल जाता है। जरूरी नहीं आप यही प्रोसेस फॉलो करें, आप फिजिकली भी उन जगहों पे जो सर्विस पॉइंट्स हैं वहां पर ये डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और वहां पर भी हैंड टू हैंड बनवा सकते हैं। इट इज जस्ट एन ऑप्शन आई हैव गिवन यू। सो द वे आई हैव ट्राइड, बिकॉज मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा। बट there can be multiple ways to do one particular task. It is not necessary that you have to follow only this only. So I hope you like the video. Please like, subscribe and share with your friend जो नए आए हैं क्रैको में, क्योंकि आपको जोन का डाउट क्लियर हो जाएगा, यद ऐप क्लियर हो जाएगा, और साथ में ये कार्ता क्रिकोस्का जो कार्ड है या कार्ता मियस का जो कार्ड है वो कैसे अप्लाई करना है, ये वाले डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि उससे मुझे कुछ ज्यादा फायदा होगा, बट इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारा ज्ञान है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको इन टॉपिक्स पे कंफ्यूजन है। तो आई होप थोड़ा सा, कम से कम 50% भी अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर करने में कामयाब हूँ, तो मेरे इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एंड इट रियली रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम एंड ऑल्सो एनर्जी ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु हैव हेल्प मी मेकिंग दिस। सो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मैंने मिस कर दी है, तो प्लीज कमेंट में डालिए, ताकि मैं उसे डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूं, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं हो सकती लेकिन डिस्क्रिप्शन अपडेट हो सकती है। एंड दिस विल हेल्प यू सिंप्लीफाई योर डाउट। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं वीडियो ला रहा हूँ वो यूथ्रो पे ला रहा हूँ, डेडिकेटेड एपिसोड, जिसमें कुछ रेफरल कोड्स भी हैं जो आपको और टेस्ट जो पेड टेस्ट है उन पे डिस्काउंट में हेल्प करेगा। सो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आइडिया अबाउट दिस चैनल इज टू मेक द लाइफ सिंपल फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स इन नीड। So thank you so much for watching till now and having patience. Let's stay in touch. Please like, please subscribe, please share with your friends. Jai Hind, Jai Bharat, and Do Bizenia.